Let us start with the two physical quantities, distance and displacement. Now see, whenever we are discussing or doing a comparing between two quantities, distance, displacement or any else, so while making a differentiate, the first point is always definition. So what is the definition for distance? So distance is the actual path traveled by a body in a motion while going from one point to another point. Okay. Whereas displacement is a minimum distance between starting point to finishing point. That means initial point to last point. Now what is the meaning of both of this definition? Let us see by example. We are creating one story. अमित नाम का एक लड़का है, थोड़ा सा नटखट है. अमित नटखट है, आपके जैसा मस्तीखोर है. तो जब वो स्कूल के लिए निकलता है, तो पहले अपने घर से निकलते हुए पहले उसके दोस्त के घर, बंटी के घर पे जाता है. बंटी बी के घर पे जाता है. ही ट्रैवल 150 मीटर. बाद में अमित और बंटी, उनका और एक दोस्त है चंदू, के घर पे जाते हैं 300 मीटर. तीनों मिलकर दिलीप के घर पे जाते हैं 200 मीटर. यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चलता है बहुत लेट हो गया है, तो चारों जन भागकर स्कूल पहुंचते हैं. इस तरीके से रेगुलरली अमित ट्रैवल. बट अमित की एक सिस्टर है अनीता. नाउ ये बहुत सीधी सादी लड़की है, सिंसियर लड़की है. ये जब घर से निकलती है, ए पॉइंट से निकलती है, सो नो राइट नो लेफ्ट, शी इज गोइंग डायरेक्टली रीचिंग टूवर्ड्स एस, दैट इज स्कूल. सो इन दो एग्जाम्पल में अमित और अनीता में वन इज द डिस्टेंस एंड अदर इज डिस्प्लेसमेंट. नाउ आप इनडायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि हु चेंजेस डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली, या किसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दैट इज द डिस्टेंस. एंड हु ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, a fixed direction, that is the displacement. So your better notes, Amit covers or Amit travel distance, whereas Anita travel displacement. क्योंकि see A to S for a Amita the total is 150, 300, 200 and 150. Total is 800 meter. This is what actual path traveled by Amit. But in the case of Anita, it is a minimum distance in specific direction. And this minimum distance must less than this actual one. So may I say that it might be 500 meter for Anita. And Anita covers displacement, Amit covers distance. Now, सेकेंड पॉइंट हम लोग अभी यहां पर इनडायरेक्टली डिस्कस भी कर चुके हैं. Whoever is in a fixed direction is वेक्टर क्वांटिटी. जहां पर डायरेक्शन फिक्स है, जहां पर डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस. सो इन द केस ऑफ अनीता, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Whereas for Amita, that is distance, is a scalar quantity. So this is our second point of difference after definition. So second point between distance and displacement is, one is a scalar quantity, distance is a scalar quantity, and displacement is a vector quantity. So for a 2 marks, 2 point is more than enough for a differentiate if it is asked in exam. Now see, both, though they have a difference, but there is one common thing between them. Their units of distance and displacement are same. Which are that? SI and MK's unit for distance and displacement is meter. Meter is the SI unit of distance and displacement. And CGS unit for both of these quantities centimeter. We are going to see speed and velocity. So what is the speed? The distance traveled by an object in a unit time. Unit time is particular time. Is called speed.
यानी एक सर्टेन टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज द स्पीड. वेयर एज वेलोसिटी, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सी यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन ये वर्ड आ रहा है, इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ velocity. If you are going to see in both of this definition, a minor change is there, minor addition in the definition of velocity, and that minor addition is a particular direction. यानी velocity के लिए direction particular होना जरूरी है. So guys, you are better know to write what will be the second point between them. You are absolutely right. That is, one is a scalar quantity and other is a वेक्टर क्वांटिटी. तो कौन सी स्केलर हो सकती है? यस, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो सेकेंड पॉइंट वी कैन से स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. थोड़ा सा ऐसे ही समझने के लिए, स्पीड एस, स्केलर एस, वेलोसिटी v, वेक्टर का v, एस एस वी वी से ध्यान में रखो. कैसे भी, सी हाउ टू डू अ स्टडी, नो वन विल टीच यू. यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन पॉइंट्स, ओन लॉजिक्स इन अ साइंस. चलो थर्ड पॉइंट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, बट बाय यूजिंग अवर ओल्ड सिलेबस पैटर्न आई एम क्रिएटिंग अ थर्ड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज लाइक दिस वन. Rate of distance is also known as speed. हमारे ओल्ड सिलेबस में स्पीड की डेफिनेशन इस तरीके से थी. The rate of distance is also known as speed. अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं. We are learning this lesson belongs from physics. और फिजिक्स के लेसन में, बहुत सारे लेसन में हम लोग को रेट ऑफ ये वर्ड बार बार सुनाई देगा. एंड व्हेनेवर किसी भी डेफिनेशन में रेट ऑफ वर्ड रहेगा, तो ये रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम. डेफिनेशन में रेट ऑफ रहेगा और उस डेफिनेशन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का रहेगा, तो उसको डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग को यूटिलाइज करना पड़ेगा. हाउ कैन बी इट इज लाइक दिस वन. रेट ऑफ डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम. किसका? रेट ऑफ डिस्टेंस का. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड. सिमिलरली यहाँ पर एक वापस मैंने क्रिएट की हुई डेफिनेशन. एक्चुअली आई हैव नॉट, इट इज इन अवर ओल्ड सिलेबस. रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सी यहाँ पर वापस वर्ड है रेट ऑफ हुम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी. सो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? velocity is equals to rate of means divided by time, whose rate of displacement. So guys, we can make our third point. As we have seen a difference between speed and velocity, but there is a one common factor between them, that is their units of speed and velocity. SI, international system, international standard. MKS is actually dimension. MKS एंड CGS के ऊपर हम लोग एक लेक्चर में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे. बट MKS इज अ बिगर, SI एंड MKS इज अ बिगर यूनिट, CGS इज अ स्मॉलर यूनिट. सो वेलोसिटी एंड स्पीड की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड, विच वी आर राइटिंग m upon s, whereas CGS unit for speed and velocity is centimeter per second. We can write it as a cm upon s. Guys, if you do a close study of speed and velocity, we can see that speed and velocity में इतना ज़्यादा difference नहीं है. If any speed is in a specific direction, one direction, then that speed is known as velocity. So may I say that if speed plus specific direction is equal to velocity, इसको थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बोलता हूं मैं. Velocity is affected by two things. One is the speed and other is the direction. Velocity is affected by two things, speed and direction. How it is? See, यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन किए.
If speed changes but direction remains same, unchanged, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो जाता है. एज आई सेड टू यू, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. इसमें से कोई एक चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट में स्पीड रिमेन्स अनचेंज, दैट मीन्स इट रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन चेंजेस. In that situation, velocity changes. Third point, if speed and direction both changes, then velocity changes. आप में से बहुत जन को टॉपिक समझ में नहीं आया रहेगा ये. So let us do the same one by activity. Velocity depends on two factors. One is the speed and other is the direction. If both are remain unchanged, remain same, then velocity is also remain same. But suppose if speed changes and direction remains same, then velocity changes. This is our first point. For a second point, speed remains same but direction changes, then velocity changes. This is our second point. In the third point, we said that if speed and direction both changes, then velocity changes. It is so simple, guys. It might be asked in exam. Take care.